हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्रिसमस ट्री विंड स्पिनर। दिस इज़ परफेक्ट फॉर हैंगिंग और यू कैन हैंग इट ऑन योर क्रिसमस ट्री ऑन सेपरेट ऑन विंडोज़। टू मेक दिस, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टाइप्स ऑफ yarn, ब्राउन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ग्रीन एंड लास्ट में वाइट। इसके लिए 3 mm का हुक यूज़ करेंगे एंड ब्राउन कलर यार्न से पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये स्लिप नॉट को हम लूज़ एंड से टाइट कर सकते हैं, जो हमारा लूज़ यार्न है। एंड ये जो लूप बना है इसको हम जो हमारे फिंगर पे यार्न है उससे टाइट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट मेकिंग चेन 1 2 3 एंड इन टोटल वी हैव टू मेक 15 चेन्स। हमें 15 चेन्स बनाने हैं। अब 15 चेन के बाद एक चेन एक्स्ट्रा करेंगे एंड हुक से सेकंड चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। सो फाउंडेशन चेन के बाद में फर्स्ट राउंड में हमें 15 सिंगल क्रोशे करने हैं इन ईच चेन, 1 single crochet in each. So in total there will be 15 single crochet in round 1. Now after completing 15 single crochet we will attach green yarn and green yarn को अटैच करने के लिए हमारा जो लास्ट सिंगल क्रोशे है उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ हम दोनों ही यार्न्स को आपस में अटैच करेंगे एंड देन हम जो हमारा सिंगल क्रोशे है लास्ट वाला उसको कंप्लीट करेंगे। दोनों ही यार्न को हम लूप से पास थ्रू करेंगे। अब ब्राउन यार्न को हम इस हुक से निकाल देंगे एंड नाउ secure both the yarns together. Now we will do 3 double crochet in each stitch for next 5 stitches. अगले 5 स्टिचेस तक हमें हर स्टिच में 3 डबल क्रोशे करने हैं। 1 पेयर हम कर चुके हैं 3 डबल क्रोशे का। नाउ second cluster of 3 single crochet. Now third cluster of double crochet. Now this is fourth cluster of double crochet. One, 2, 3 and 4. One more. This is the last cluster of 3 double crochet. 1 double crochet, 2 double crochet and 3 double crochet. So इन 5 स्टिचेस में हमने 3 डबल क्रोशे क्लस्टर किया। अब नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर करेंगे, 3 हाफ डबल क्रोशे। फर्स्ट क्लस्टर ऑफ 3 हाफ डबल क्रोशे, second cluster of 3 half double crochet and fourth cluster, this is the third,
cluster of 3 half double crochet, and now this is the last cluster of 3 half double crochet. Last one. So in first 5 stitches हमने किया 3 डबल क्रोशे क्लस्टर, जो नेक्स्ट 5 स्टिचेस में 3 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर, एंड जो लास्ट के हमारे 5 स्टिचेस है उसमें हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशे क्लस्टर। मतलब एक ही स्टिच में हमें 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करना है। 2 क्लस्टर हो गए हमारे। नाउ थर्ड क्लस्टर ऑफ 3 single crochet, fourth cluster of 3 single crochet, and last and fifth cluster of 3 single crochet. Chain 1, and now turn your work. Now in every 15 stitches, for first 15 stitches there will be 2 single crochet. अगले 15 stitches तक हमें 2 single crochet करने हैं हर एक स्टिच में। This is 4th time 2 single crochet, 5th time 2 single crochet, 6th time 2 single crochet, 7th time 2 single crochet, 8th time 2 single crochet, 9th time 2 single crochet, 10th time 2 single crochet, 11th time 2 single crochet, 12th time 2 single crochet, 13th time 2 single crochet, 14th time 2 single crochet, and 15 and last time 2 single crochet. Now for next 15 stitches हम करेंगे 2 half double crochet. First time 2 half double crochet, second time 2 half double crochet, now third time 2 half double crochet, fourth time 2 half double crochet, 5th time 2 half double crochet, 6th time 2 half double crochet, 7th time 2 half double crochet, 8th time 2 half double crochet, 9th time 2 half double crochet, 10th time 2 half double crochet, 11th time 2 half double crochet, 12th time 2 half double crochet, 13th time 2 half double crochet, 14th time 2 half double crochet, and
last 15th time to half double crochet. Now last 15 stitches, 2 double crochet in each stitch. First time, now second time, second time, 2 double crochet, third time, 2 double crochet, fourth time, 2 double crochet, fifth time, 2 double crochet, sixth time, 2 double crochet, seventh time, 2 double crochet, eighth time, 2 double crochet, ninth time, 2 double crochet, 10th time, 2 double crochet, 11th time, 11th time, 2 double crochet, 12th time, 2 double crochet, 13th time, 2 double crochet, 14th time, 2 double crochet, and 15th last time, 2 double crochet. So now we will change yarn, white color yarn. Chain 1, turn your work, and in the first stitch slip stitch, chain 1, next stitch slip stitch, chain 1, next stitch slip stitch, chain 1, slip stitch. We will repeat the process till the other end of the round. Chain 1, slip stitch, 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 slip stitch, chain 1, 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 slip stitch, slip stitch, chain 1, 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 slip stitch, chain slip stitch, chain 1, 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 slip stitch,
chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch, chain 1, slip stitch. So this pattern has to be repeated 20 times. We have to repeat chain 1 and slip stitch. In our third round we have total 90 stitches, so we have to repeat it 90 times. And after doing the 19th stitch we have to pull out the thread and secure it, hide the tail. With the brown yarn we have to attach a bell or any kind of weight you want. Now thanks for watching. Do like, share and subscribe.